talk about something that is common but still unrecognized: emotions. Yes, you heard it right, emotions. We often think of our brains as objective processors of information, like a perfectly balanced scale. But the truth is, our emotions play a vital role in how we perceive and interpret the world around us. Our emotions act like filters, subtly coloring the way we see. सांप ने कहा, अरे वो तो मेरे दोस्त हैं। इस कहानी में पेड़ हमारा देश है, कीड़े भ्रष्टाचार हैं, कटकोरवा ईमानदार अधिकारी है और सांप तो आप समझ ही गए होंगे। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे देश को अंदर से खोखला करता है। आदरणीय अध्यापक गण एवं समस्त श्रोतागण, आप सभी को शुभ अपराह्न। आज मैं देव पवार आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूँ जो हम सभी को कभी न कभी प्रभावित करता है: सार्वजनिक बोलने का डर। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक ऐसे मंच पर खड़े हैं जहां आपके विचारों को सुनने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं। आपके पास एक अवसर है अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का, लेकिन फिर सार्वजनिक बोलने का डर आपके दिमाग में आ जाता है। यह डर हमें अपने विचारों को व्यक्त करने से, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक बोलने का डर वास्तव में एक अवसर होता है जो हमें अपने आप को सुधारने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का मौका देता है? Gender-based violence. This is not just a problem, it is a challenge to the value of our society, where women and girls are harmed simply because of who they are. Recently, in Kolkata, a young woman doctor was brutally attacked and killed at her workplace by someone who should have protected her, a police volunteer. This sad incident shook the nation, but it is not the only one. Countless women in our country live in fear every single day, unsure if they will come home safe. Over 1,000 crimes happen every single day. That means 51 crimes every year. Important and precious in our life. Time never waits for anyone. No one can stop or slow down the time. It keeps going, whether someone likes or not. Time is not reversible. It means we have to use it sensibly. All things are born on time, grow on time, and die on time. It has no beginning and no end. Time is so important that if you did not have any, these differences make our world beautiful. Like rainbow. Rainbow is beautiful because of all its colors. This is called diversity, and it is something that we should celebrate. But sometimes people are treated unfairly because of their skin color, gender or religion. This is called discrimination, and it is wrong. We have power to stop discrimination. First, we should respect everyone no matter caste. So now I will tell you what is conscious and unconscious mind. Conscious mind, the part of our awareness focused on present thoughts, feelings and sensations, actively processing information we are currently experiencing. Secondly, unconscious mind, a vast hidden part of the memory storing mainly ignored and people will focus on anything else like playing and studying and all. We will try to focus on our studies, but we forgot that mental health is also important as our physical health. और यह सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका, हमारी सोच को दिशा देने वाली मिसालें हैं। अगर हमें संस्कृत नहीं आएगी तो क्या हम इन्हें पढ़ पाएंगे? अब कुछ लोग यह भी कहते हैं कि संस्कृत का मतलब सिर्फ धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों से ही है। नहीं, इसका असर हमारे दैनिक जीवन में भी है। क्या आप जानते हैं संस्कृत का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी किया जाता है। यह भाषा इतनी सटीक और व्यवस्थित है कि आज के वैज्ञानिक भी इसके व्याकरण की तारीफ करते हैं। Because the task feels too big or too difficult, and instead of diving into it, we avoid it, turns to distractions or checking emails, just doing anything to avoid the task. But here's the truth: procrastination. Studies shows that social media can increase the feeling of loneliness and depression. In fact, a study by the American Academy of Pediatrics shows that
4% of teens feel that social media make them feel worse about themselves. This happens because most of the people post only their best moments, leading others to एक compare साथ their समाहित lives. हैं। विविधता में एकता की भावना ही हमें एकजुट बनाती है। अगर हम गौर करें तो हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। यही भारत की पहचान है। भारत की एकता का प्रमाण उसके इतिहास में भी मिलता है, जब अलग अलग धर्मों और जातियों से आने वाले महान नेताओं ने हमें एक साथ मिलकर आज़ादी दिलाई। अच्छा चलिए, यह तो बात हुई कुछ साल पहले की ही। अब चलते हैं 7000 वर्ष पूर्व, जहां इंसानों और वानरों ने मिलकर एक ऐसा सेतु बनाया जिसके अवशेष आज भी कायम हैं। इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म में भी राजा खलीफा उमर इब्न खत्तब के शासन में इस्लाम राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। Imagine this, you wake up and first thing you reach for is your phone. Hours pass as you scroll through endless feeds, messages, replies, and hop between apps. Sound familiar? Yes, of course. Now ask yourself, when was the last time you had conversation with your own mind? When did you allow yourself to simply be, to reflect, to breathe, to exist without the use of the screen? Today, I take you to a journey with me in the personal and universal topic that is digital detox and its impact on human mind. On Jamfitang was also started by this. I think we've absolutely evolved because once upon a time our parents used to say, stop staring at the TV. Now we carry the TV in our pockets and stare at even more. Evolution, I guess. Even kids born after or during pandemic are less focused, less developed than the people born before. One of the biggest reasons was increased screen exposure. Parents unknowingly provided mobile to kids, which disturbed their attention span and focus a lot. I think this pandemic has really destroyed attention span. Inequality and violence. We are objectified, marginalized, and excluded from opportunities. We need empowerment to break free from social norms and expectations, to pursue our dreams, make choices, and live life on our own terms.